Okay, ji guys, students, this is lecture number 5 regarding optical instrument. Last time we have studied lecture number 4, that was optical fiber, its principle, total internal reflection, um, and Snell's law, and then continuous refraction. Today we are going to discuss the types of the optical fiber के कितने types के optical fiber exist करते हैं. There are 3 types of the optical fibers, which are single mode step index fiber, first one, and the multi-mode step index fiber, and the multi-mode graded index fiber. There are 3 types of the optical fibers: single mode, multi-mode step index, and multi-mode graded index. What does it mean by the mod? Mod mean it is described as the method by which light is propagated within the fiber. के fiber के अंदर से light किस method के through propagate होगी, that will define the mode. Now come to the single mode step index fiber. Single mode or mono mode. Mono stands for one, so mono mode or single mode is the same thing. Step index fiber has a very thin core. Core is the internal part, जो अंदर वाला part होता है उसको कहते हैं. Let me show you from the previous lecture. Like in this case, इसमें जो internal part होगा वो core होगा, उसके ऊपर एक दूसरी covering होगी which is cladding. So in this case, single mode step index, the core have a diameter from 5 micrometers, mean very thin diameter. Diameter बहुत कम होगा, 5 micrometer diameter, और उसका refractive index, let's say we can say that is N1. Come to the outer part, that is called cladding, और इसका refractive index N2 है, और that is made up of glass or plastic. ये सिंगल या मोनो मोड की बात हो रही है. इसमें जो कोर है उसका जो डायमीटर है दैट इज़ 5 माइक्रोमीटर, और जो क्लैडिंग है वो ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज़ होता है. मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल, क्रोमेटिक यू कैन से द वेवलेंथ. तो सिंगल वेवलेंथ हम यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ लाइट, रेड कर लें, ग्रीन कर लें, बट दैट शुड बी मोनोक्रोमेटिक. इट कैन कैरी 14 टीवी चैनल्स और 14,000 कॉल्स एट द टाइम. द सेम टाइम ये इसकी कैपेसिटी है या बैंडविड्थ जिसे कहते हैं, दैट इज़ 14 टीवी चैनल्स के सिग्नल को कैरी कर सकता है या 14,000 कॉल्स को. Now the second is multi-mode step index fiber. This fiber with a core of relatively larger diameter of 50 micrometer or greater. यानी सिंगल मोड पे जो मल्टी मोड होता है इसका जो डायमीटर है दैट इज़ ग्रेटर एंड रेंजेस फ्रॉम 50 micrometer and up to you may use the greater diameter. It is mostly used for carrying white light. वाइट लाइट यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि लाइट डिस्पर्स हो जाती है, तो उस डिस्पर्शन की वजह से हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक यूज़ नहीं कर सकते. जो कोर है, कोर हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, क्लैडिंग हैज़ अ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2. क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ द पिक्चर. इसमें जो डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, डॉटेड एरिया दैट इज़ क्लैडिंग और इनसाइड दैट इज़ कोर. N1 से लेकर इस एक्सिल लाइन से लेकर आउटवर्ड जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है, और जब से ये बाउंड्री स्टार्ट होती है क्लैडिंग की, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज़ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर. Then multi-mode graded index fiber, it is the fiber which has a variable refractive index in the core. इसमें आपने देखा था मल्टी मोड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है N1 से लेके N2 तक, और जब क्लैडिंग स्टार्ट होता है फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है, N2 की वैल्यू वेरी करती है. बट ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर N1 से आप मूव करते हैं N2 की तरफ, तो ग्रेजुअली जो होता है वेरी करता जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांस्टेंट रहना चाहिए.
It has a large diameter from ranges from 50 to 100,000 micrometer, यानी इसका diameter भी क्या होता है, large होता है. The frequency index decreases from middle to the outer surface, ये बता चुका हूँ मैं. It is very useful for long distances, यानी जब आपने सिग्नल को या इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रेवल करवाना है, दैट मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज़ सुटेबल फॉर फिजिबल फॉर दैट. और इसमें भी हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ signal transmission and conversion of sound, how we can send information. उसकी एक डायग्राम देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ ट्रांसमीटर विच इज़ सेंडिंग द इंफॉर्मेशन, जो ट्रांसमिट कर रहा है. लाइक आप बोल रहे हैं, आपकी साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, वो साउंड प्रोड्यूस जो साउंड वेव्स हैं, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमीटर. आगे उसमें जो भी कन्वर्टर लगा हुआ है, जो भी मॉड्यूलेटर लगा हुआ है. सो ट्रांसमीटर इज़ बेसिकली दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल. आपने फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन से बोला, माइक्रोफोन से आपकी जो साउंड वेव है, दैट आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. आगे ट्रांसमीटर लगा हुआ, दैट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू द लाइट सिग्नल. द सेकंड वन इज एन ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल को गाइड करता है, मोड को डिफाइन करता है कि कैसे, किस मोड से जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, और इस सिग्नल को पाथ प्रोवाइड करता है. And the last one is the receiver the convert light signal into electrical signal. ये block diagram है, this is the source, we are using microphone. यहाँ से source से जो signal convert हुआ किस में, electrical signal में. देन आगे लेज़र लगा हुआ है, लेज़र मीन दैट इज़ कन्वर्टिंग, आप कह लें मॉड्यूलेटर है या ट्रांसमीटर है, दैट इज़ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द डिजिटल लाइट सिग्नल. डिजिटल लाइट सिग्नल के बाद ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, दैट इज़ दैट रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं. आगे फोटो डायोड और यू कैन से डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ है, दैट कन्वर्ट लाइट सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. एंड देन दिस इज़ ईयर पीस, जहाँ से आप आवाज़ को सुन सकते हैं. तो ये तीन पार्ट थे. द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसमीटर, सेकंड इज़ ऑप्टिकल फाइबर और रिसीवर. ये तीन पार्ट थे. Then what are the advantages and disadvantages of using optical fiber? First of all, talking about advantages, high bandwidth, it means it can carry more electrical signals, more information at the same time. इसके जो signal carry करने की capacity है, that is greater. तो दिस विल गिव यू द एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑन द कॉपर वायर या दूसरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आप एट द सेम टाइम मल्टी सिग्नल, मल्टी इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकते. सो हाई बैंडविड्थ इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. लो लॉस मीन नो लाइट स्केपिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल फाइबर. लाइट स्केप ही नहीं हो रही, स्केप नहीं होगी तो पावर लॉस भी नहीं होगा. ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी कन्फाइंड इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर. So this one is another advantage. Third one, small size and lightweight. Small size and lightweight mean as we have discussed that the diameter is about ranges from 50 micrometer. Micro की range में है, which is very small. Small size है और weight भी light है, which mean it's very easy to install. It's very easy to transfer एक जगह से दूसरी जगह, या इसको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Third one is signal security. Signal security mean there will be the no interaction of the information. Like phone की lines में होता है, signals mix हो जाते हैं, electrical signal interfere कर जाते हैं. But in this case, this specific case, signal security will be the priority, or signal security will be provided by the optical fiber. Talking about the disadvantages, cost mean though it is very the raw material is available, लेकिन raw material को आगे transform करने में optical fiber में that requires expensive method. वो एक एक्सपेंसिव मेथड है जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को इनटू दैट ऑप्टिकल फाइबर. तो ये बहुत कॉस्टली है, उसको बहुत केयर के साथ, बहुत एहतियात के साथ यूज़ करना पड़ता है और कन्वर्ट करना पड़ता है. सर्टन टेम्परेचर और प्रेशर और सर्टन इसकी जो फिज़िकल कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, विच रिक्वायर्ड ऑब्वियसली द इक्विपमेंट्स, एंड दैट इज़ टू मच कॉस्टली.
Mechanical problems mean the optical fiber is very delicate बहुत नाजुक सा है और इसको जब इंस्टॉल करते हैं और उसकी जो कवरेज है और उसकी प्रोटेक्शन दैट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज इट कैन ब्रेक थ्रू अ वेरी लिटिल फोर्स बाय वेरी लिटिल फोर्स तो इसको मैकेनिकली प्रॉब्लम ये है कि ये इट इज़ वेरी डेलिकेट हैज़र्ड्स विद लेज़र हैज़र्ड विद लेज़र्स मीन कि लेज़र के थ्रू आप जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसमिट करते हैं एंड दैट मे अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी तो उसके लिए प्रॉपर प्रोटेक्टिंग और इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं. So that was all about the types of optical fiber, and we are left with nothing in this chapter. We've discussed all the main topics, and rest of you can study at the home. If you got any question, then post it on the WhatsApp group. I'm going to answer that first. Thank you very much, and take care. Allah Hafiz.